Okay, we are going to start lecture 4 on the same chapter, that is the real number, and I have taken some question regarding or related to Euclid division lemma and fundamental theorem of arithmetic. So some question are based on Euclid division lemma and fundamental theorem of arithmetic. The first question is on Euclid division lemma. What? Find the greatest number. Find the greatest number that divide 1305 and 4665 and 6905, leaving the same remainder. There is a condition. What? We have to find out the greatest number of three number, that is 1305, 4665 and 6905, leaving same remainder in each case. Okay, and also find out the sum of the digit of the greatest number. So student, when question asked about the greatest number, so you must keep in mind greatest number means HCF. So here the remainder is the same in each case. That's why we will find out the difference between them. For example, 4665 minus 1305 will get 3360. And similarly आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट कीजिए फिर इस तरह से आप you will get three numbers. Okay, now firstly we will find the HCF of these two numbers. I have done here. 2240 will go one time, remainder will be 1120, and again 2240 will become what? Dividend, and then it will go two times. 1120 will go two times, and it remainder 0. It means HCF of 2240 and 3360 is 1120. Now the third number is remaining, that is 5600. Now we will find out the HCF of 5600 and 1120. We will find that HCF is 1120. So today, HCF of all these three numbers after subtracting, we will get that 1120. So this is the greatest number. This is the greatest number that we have to find out. जो हमें फाइंड आउट करना था, जो हमें निकालना था, that is the 1120. अब हमें पूछा भी गया है what is the next question, that is the sum of digit. So sum of digit, simply add them. 1 plus 1 plus 2 plus 0 is equal to 4. So this question is based only Euclid division lemma. Okay, now another question I have taken for any positive integer n. It is for any positive integer Z for integer n is any positive integer, prove that n cube minus n is divisible by 6. Okay, so this question is also based on Euclid division lemma. So solution here, let n be any positive integer, okay, and it is divisible by 6. Where we have find out 6, because in the question it is already given that it must be divisible by 6. That's why I have taken 6 as a divisor. So let n be any positive integer and it is divided by 6, that is divisor. There will be quotient q and remainder r. So according to Euclid division lemma, we can write n is equal to 6q plus r, where r is less than 6 but greater than or equal to 0. So possible value of r is 0, 1, 2, 3, 4 and 5. So case number 1, when r is equal to 0, then n is equal to 6q plus 0, that is 6q, but we are given n cube minus n. So when we will take n as a common, so n into n square minus 1. Now
put the value of n here. So after putting the value of n, so n is equal to 6q. Okay, the 6q whole square minus 1. So multiple of 6. So here we can say that here it is a multiple of 6 too. So it is divisible by 6. Case 2. When r is equal to 1, hence n is equal to 6q plus 1. So nq minus 1. Again n we can take n as a common, n into n square minus 1. They again putting the value of n, that is 6q plus 1. We will get 6q plus 1, 6q plus 1 whole square minus 1. After solving we will get 6q plus 1 and 36q square plus 12q. We can take out 6 common from these two. From these two terms, that is 6 into 6q plus 1, and after taking the common it will remain 6q square plus 2q. So again it is divisible by 6. It is a multiple of 6. So it is divisible by 6. Similarly, case 3, when r is equal to 2, n is equal to 6q plus 2. So again nq minus n. After putting the value n is equal to 6q plus 2, we will get at the last end one. We will get that 6 is a this equation is a multiple of 6. Hence we can say that all these number, that is nq minus n, in all these cases we can find that nq minus n is divisible by 6. Similarly, you can go for case 4 when r is equal to 3, case 5 that is r is equal to 4, and case 6 that is r is equal to 5. In all cases you will see that nq minus n is divisible by 6, because हमने देखा है कि 6 का सब में 6 क्या है, मल्टीपल आ रहा है. जैसे कि यहाँ भी आपका 6 का मल्टीपल आ रहा है. हियर यहाँ भी आपने देखा कि 6 मल्टीपल आ रहा है. यहाँ भी हमने देखा कि 6 मल्टीपल आ रहा है. इन ऑल केसेस में देखते हैं कि सबका 6 का मल्टीपल आता है. इसका मतलब कि जो नंबर 6 का मल्टीपल होगा दैट इज डिविजिबल बाय 6. तो we can say that nq minus n is divisible by 6. So again we are continuing lecture 4, and in this lecture I have taken 2 more important questions, that is the proving of irrationality of irrational number and using of fundamental theorem. Check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0. Okay, so let us start the first question. Prove that 2 root 3 is irrational number. हमें प्रूव करना है कि 2 root 3 irrational number. मैंने बताया था कि इसमें contradiction पे it is this proof is based on the proof of contradiction. यानी जो सही है उसको गलत मान लेना है और गलत को फिर गलत प्रूफ कर देना है, यानी पहले वाले को ही सही ठहराना है. तो उसी को बेस्ड है. तो let us assume or suppose to the contrary that 2 root 3 is a rational number. If 2 root 3 is a rational number, it's so it can be written as in the form of p by q. So p by q is equal to 2 root 3 where p and q are co-prime. Okay, on rearranging we get p by 2q is equal to root 3. Here 2 is in multiplication with root 3. When we transpose on that side, we will have p by q is equal to root 3, where p, q and 2 are integer. So p, 2 and q are integer, and we know that p, q, 2 are integers, and all integers are rational numbers. So therefore p by 2q is a rational. So p by 2q is a rational. Therefore, also why? That's why root 3 is also rational, because this is rational. So and this rational is equal to this one.
so that under root 3 is also rational. p by 2q is rational, इसलिए ये भी rational होना चाहिए. But this contradicts the fact that root 3 is irrational. अब यहाँ पर फिर contradiction आया, क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि root 3 rational नहीं है, क्या है? irrational है. So we conclude at last we conclude that 3 root 2 is an irrational number. I hope ये clear हो गया होगा. Question number next question number क्या बोला? Check whether 6 raised to the power n can end with the digit 0. Okay. Solution देखिए. If the number, student, you know, if any number end with the digit 0, the prime factor of that number always contain 2 and 5. For example, 30. 30 is a number which is ending with digit 0. So prime factor is 2 into 3 into 5. And the prime factor of 30 is containing 2 and 5. Okay, because this 30 is ending with digit 0. Similarly, take another example. Suppose that 50, which is ending with 0. The prime factor is 2 into 5 into 5. Okay, the prime factor is in the prime factor of 50, 2 and 5 is 2 and 5 are coming as a prime factor. So it is compulsory that when a number ending with the digit 0, the prime factor must contain 2 and 5. Okay. So this is this question is based on this concept. So if the number 6 raised to the power n for any n were to end with the digit 0, then the prime factor of 6 raised to the power n must contain 2 and 5 as prime numbers. Okay, but here 6 raised to the power n, the prime factor of 6 raised to the power n contains only 2 and 3, that is 2 into 3 raised to the power n. So factorization of 6 raised to the power n only contains 2. It doesn't contain 5. But here is the condition is there कि if अगर कोई भी नंबर अगर 0 से एंड होगा तो उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 क्या होंगे? शामिल रहेंगे. लेकिन यहाँ प्राइम फैक्टर में ओनली 2 और 3 शामिल हैं. 2 तो शामिल है लेकिन 5 शामिल नहीं है, क्योंकि एंड से डिलीट होने के लिए, 0 से एंड होने के लिए उसके प्राइम फैक्टर में 2 और 5 दोनों होना चाहिए, जबकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ 2 ही शामिल है. तो हम कह सकते हैं according to fundamental theorem of arithmetic, prime factorization is unique for any composite number. So 6 raised to the power n never ends with digit 0. Okay, sir. चले हाँ? चले खत्म हो गया. खत्म. इतना मजा आ. Now again I am going to revise rational number. Let x be a rational number whose simplest form. Simplest form means what? The HCF of p and q is 1, or you can say that p and q are co-prime, where p and q are integer and q is not equal to 0. Then x is terminating decimal, only q is the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n, where power, that is m and n, are non-negative integer. For example, कोई भी रैशनल नंबर जो p by q के फॉर्म में होगा वो टर्मिनेटिंग कब होगा? जब उसका डिनोमिनेटर किस फॉर्म में हो? 2 raised to the power m into 5 raised to the power n के फॉर्म में हो, जहां m और n क्या हो? नॉन नेगेटिव पावर के फॉर्म में हो. फॉर एग्जांपल 31 डिवाइडेड बाय 2 raised to power 2 into 5 raised to the power 3. तो यह देखिए q is in the form of 2 raised to power 2 into 5 raised to the power 3. Here
m is equal to 2 and n is equal to 3. Power are non-negative integer. So we can say that this is an example of terminating decimal of rational number. Similarly, 33/15. After writing the denominator in the form of 2 into 5 into 5, that is 33 into 2 raised to the power 1 into 5 raised to the power 2. Again, the denominator is in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. This is in the form of 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. So we can say that this is an example of terminating decimal of rational number. Second, तो एक चीज है नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल if q is not is in the form of p 2 raised to the power m into 5 raised to the power n. For example, student, 121 divided by 2 raised to the power 2 into 3 raised to the power 2 into 7 raised to the power 5. यहाँ 2 की पावर के साथ साथ 3 के पावर और 7 के पावर भी मौजूद हैं. तो जबकि टर्मिनेटिंग के लिए या तो 2 raised to power m होना चाहिए या तो 5 raised to power n के फॉर्म में होना चाहिए या फिर इन दोनों का प्रोडक्ट में हो, तभी वो आपका टर्मिनेटिंग होंगे. तभी वो टर्मिनेट या तो अकेले 2 के पावर m आए या अकेले 5 के पावर n आए या इन दोनों को प्रोडक्ट के रूप में आए, तभी आपका टर्मिनेटिंग होगा. अगर इनके अलावा कोई और प्राइम नंबर कहा जाता है वो और उसका पावर आ जाता है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग में चला जाएगा. फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखिए 2 raised to power 2 है, यहाँ 3 raised to power 2 है और 7 raised to power 7 है. ये दो अलग अलग प्राइम नंबर आ गए. तो इसका ये जो डिनोमिनेटर है वो किस फॉर्म में नहीं है, 2 raised to power m into 5 raised to power n में नहीं है, n के फॉर्म में नहीं है. तो इस तरह के जो नंबर नहीं है तो इसको क्या बोलेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग बोलेंगे. अगेन 17/90, जब प्राइम फैक्टर देखते हैं 90 का 2 into 3 raised to power 2 into 5. अगेन 2 और 5 तो मौजूद है, उनके अलावा 3 raised to power 2 आ गया. तो इसका अगेन हम कह देते हैं कि 2 raised to power m into 5 raised to power n पावर के फॉर्म में नहीं है. क्योंकि नहीं है क्योंकि 2 और 5 तो है मौजूद, लेकिन यहाँ 3 भी मौजूद आ गया, 3 का पावर 2 भी मौजूद हो गया. तो इसको केवल इन दोनों आना चाहिए या सिंगल आना चाहिए इस तरह से, या तो 2 raised to power m आना चाहिए, 5 raised to power n आना चाहिए, दोनों को प्रोडक्ट आए तभी वो टर्मिनेटिंग होंगे. अदरवाइज क्या हो जाएंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग. इसमें एक नंबर का क्वेश्चन आता है बोर्ड में, हम आपको बता दें कि इस क्वेश्चन से सिर्फ 1 मार्क का पूछा जाता है. इस तरह क्वेश्चन में 1 मार्क का पूछता है. और कैसे पूछता है, एक्सप्रेस द 24/125 रैशनल नंबर इन द डेसिमल फॉर्म. तो डेसिमल फॉर्म में लिखना है, तो 24 divided by 125. 125 को अगर फैक्टराइज कीजिएगा तो 24 divided by 5 raised to the power 3 हो जाएगा. तो देखिए 5 raised to the power 3. अब हम इसको 10 to the power 3 बनाना है, तो 10 to the power 3 बनाने के लिए क्या करेंगे, 2 raised to the power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे. 2 raised to the power 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी करेंगे नीचे भी, यानी डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर दिए. तो देखिए क्या हो जाएगा, 24 into 8 और ये हो जाएगा, आपने पढ़ा होगा a raised to the power n into b raised to the power n. तो क्या हो जाता है, a into b raised to the power m हो जाता है. यानी इन दोनों का मल्टीप्लाई और जो सेम पावर रहेगा तो वो पावर चढ़ जाएगा. तो 24 into 8 यानी 192 और ये हो जाएगा 10 to the power 3. यानी आफ्टर 3 डिजिट यानी 192 divided by 1000. So you will get answer 0.192. Okay. So after 3 place you can put the decimal. Okay. तो ये आपका रैशनल डेसिमल फॉर्म में लिखा गया. इस तरह से आप लिख सकते हो. After how many digit the decimal will come in 17/320. तो कितने डिजिट के बाद डेसिमल आएगा 17/320 में. इसके लिए सबसे क्या करेंगे, सबसे पहले जो Q है वो आपको फैक्टराइज करना है. तो 17/70 इसको फैक्टराइज कीजिएगा 320 को, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 2 into 5 यानी 2 raised to the power 6 into 5.
तो अब हमें किस में कन्वर्ट करना है, इस वाले फॉर्म में। सेम आपको सेम पावर का लाना है। तो सेम पावर के लाने, देखिए यहाँ पे 2 की पावर 6 है, यहाँ 5 की पावर 1 है, तो सेम पावर यानी 2 की पावर 6 लाना है यहाँ पे, सॉरी 2 की पावर 6 है और 5 का पावर 1 है, यहाँ 5 की पावर 6 बनाना है। तो क्या करेंगे, 5 की पावर 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिनोमिनेटर को भी और न्यूमरेटर को भी। तो आफ्टर दैट 70 into 5 into the power 5 into divided by 6 into power 2 into the power 6 into ये हो जाएगा 5 का पावर 1 है, यहाँ पे 1 और ये 5 का पावर 5, तो 5 प्लस 1 क्या होता है, आपने पढ़ा होगा कि मल्टीप्लिकेशन में अगर सेम बेस हो तो पावर 8 हो जाते हैं, तो 5 into पावर 6 हो जाएगा। यानी अगेन जब देखिए बेस अलग अलग है और पावर सेम है तो बेस मल्टीप्लाई हो जाते हैं और पावर आ जाता है। तो यानी 17 into 5 into the power 5 divided by 2 into 5 into the power 6, तो we can write 17 into 5 into the power 5 and divided by 10 to power 6। इसका मतलब है कि आफ्टर 10 डिजिट, सॉरी आफ्टर 6 डिजिट, आफ्टर 6 डिजिट we can put the decimal। ओके, तो हमारा क्वेश्चन यही था कि हाउ मेनी डिजिट देयर आर डेसिमल मिलकर, तो डेसिमल के लिए हमेशा इससे पता चलता है, जबकि जितना 10 का पावर रहेगा उससे हम कह सकते हैं कि यहाँ पे 6 पावर है, इसका मतलब कि 6 डिजिट के बाद डेसिमल आएगा। अगर 5 आता तो 5 डिजिट के बाद, अगर 4 आता तो 4 डिजिट के बाद।